अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा ठंड में काम भी रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। और हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस इंडिया पे देखी हुई हैं और उसमें हमें ये तो पता चलता ही है कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में जो इकोनॉमी वाइज है या जीडीपी वाइज है वो काफ़ी चाइना और अमेरिका को भी क्रॉस कर लेगा या उनके आसपास खड़ा होगा। अभी जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, वाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूरा डिटेल में हमको पता चलेगा। और ये तो हम सबको पता ही है इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में ऊपर जा रहा है, तो ये तो सभी को पता है और ये फैक्ट है। स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही थी ना, स्मार्ट सिटीज़ तो बन रही हैं, गिफ्ट हो गई या बहुत सारी और स्मार्ट सिटीज़ भी हैं इंडिया की। और प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग देखते आ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, कौन से आने वाले हैं, तो काफ़ी नॉलेज हमको मिलता रहता है। सो आज वाली वीडियो हमारे पास जिस चैनल से है, वर्ल्ड इन डिटेल्स, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर इसे चेकआउट करें। ये वीडियो करने के बाद करेंगे आपसे डिस्कशन, स्टे विद अस। When we think of superpowers, the first name that comes to our mind is United States of America, followed by European Union and China, right? But there is another one country on this planet which is on the way to becoming a global superpower. This is India, the fastest growing major economy in the world. The country is already considered as one of the potential superpower of the world. This potential is attributed to several indicators, the primary ones being its demographic trend and rapidly expanding economy and military. In this video, we are going to talk about some such primary points which will contribute significantly role in making India a global superpower in future. Economic boom. In 1947, when India got independence from the British Empire, India was among the poorest countries in the world. Even in 1991, India's economy was less than the economy of Paris and London. And today, India has more economy than the France and the UK. In 2014, the country was ranked 10 in the world, but now in 2022, India has become the fifth largest economy in the world with a huge GDP of $2.5 trillion. $5 trillion. India has overtaken 5 major economies like Canada, Russia, Italy, France and the UK, and this is really impressive. India is the fastest growing major economy in the world, and according to IMF, the country is on the track to become the world's third largest economy by 2027, surpassing Germany and Japan. India is already the third largest economy in the world in terms of PPP GDP, with a huge GDP of $11.7 trillion. Population. India is the second most populous country in the world, and its potential is unlimited. India has the largest young force in the world, more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of its population below the age of 35. In the coming years, when some powerful nations like China and USA will witness a decrease in workforce, while India will have an increase in workforce. Wow. Booming infrastructure and construction. Infrastructure has a huge role in the development of any country in the world, and modern India knows this very well. The country is focusing a lot on its infrastructure. India is home to the highest number of under construction mega projects in the world. The country is working on the biggest infrastructure project it has ever done in its history. A project that working on over 9,078 mega project with spending a huge amount of $1.5 trillion. The name of this massive project is the National Infrastructure Pipeline of India. ये हमने शायद देखा था. And it is going to change everything from building a world-class infrastructure to better the quality of life of people. This $1.5 trillion will be spending over the course of 5 years, starting from 2022 all the way to 2025. Along with this, India is working on many other mega projects. Dwarka Signature Bridge. Estimated cost over $140 billion. Bharatmala is a road and highway development project, aims to build a solid network of world-class road, highway and expressway across Highways का भी हमने देखा हुआ. Sagarmala project, estimated cost over $130 billion. The main aims of the Sagarmala project is to increase the capacity of waterways and coastline
and build the world-class infrastructure to the coastline so that the country's logistic cost can be reduced minimum and can be taken maximum advantage of coastline. Delhi-Mumbai Industrial Corridor, estimated cost over $100 billion. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर Infrastructure project covering the 1,483 kilometer length between Delhi and Mumbai. 100 smart city, estimated cost over 100 $100 smart billion. cities. 100 Smart City is an urban development project with a mission to develop smart cities across the country, making them citizen friendly and sustainable. 100 Along with this, India is working on many other mega projects. देखो ना हर चीज में किया हुआ है हर जगह ही मतलब Power, हाँ। कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ना, मिलिट्री पावर. After the USA, Russia and China, वो तो the base Indian होती है Navy country is the की। fourth most powerful military in the world, and with a budget of $76.6 billion, India has Defense the budget. highest defense budget in the world. More than 1.45 million active personnel, more than 1.15 million reserve personnel, and more than 2.52 million paramilitary. The Indian military is the largest military in the world with over 5.13 million military personnel. ओए होए होए. India is also a nuclear armored country. The country is holds some of the most powerful nuclear weapons in the world. The country is rapidly expanding and modernizing its military. India is the largest importer of arms in the world. The country alone accounting 11% of global imports. As well as India is one of the largest producer of arms in the world. India export arms to over 45 countries. अच्छा एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. हाँ And modernizing its infrastructure by investing trillions of dollars. Due to this, the logistic cost of India is falling, and companies are getting attracted तकरीबन to सारा start their देखा हुआ। production in India. हमने डिफरेंट वीडियोस में सब कवर किया हुआ. Overtaken US and become the second most attractive manufacturing destination globally. India has the world's largest youth workforce, and Indian market is one of the biggest market in the world. As well as the government of India is giving $1 billion as initiatives to company to start their business and production in India. Because of this, companies from all over the world are getting attracted towards India to start their business and production. अभी एप्पल भी आया ना, मैंने तुम्हें बताया था. Already among the world's top 5 most industrialized countries with an industrial output of over $900 billion, and it is set to be third most industrialized country by 2030 with an expected industrial output of more than $3 trillion. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज में आगे है. Modern India has a strong focus on science and technology. India ranked third among the most attractive investment destination for technology. India is the largest provider of IT service and the largest provider of software service, as well as one of the largest producer of hardware and software. The world's fastest growing startup ecosystem. In 2014, India had only 400 startups, and as of 2022, India ये देखा था हमने 77,000 startups, which makes India globally the third largest startup ecosystem in the world after USA and China. Most of them comes from tech and innovation field. The Indian Space Research Organization is among the world's top 5 most successful space agencies. As of ISRO. 2022, ISRO has successfully launched over 386 foreign satellites for 36 different countries and successfully launched over 134 Indian origin satellites. There are only 4 countries in the world that have developed advanced space weapon called anti-satellite weapon, and India is one of them. India has capability to destroy the communication system of any country in the world by destroying their satellite in the space. India is among the world's 5 countries that have developed their own GPS navigation system. Other are USA, Russia, China, and Japan. And among the world's 4 countries that have successfully reached Mars and Moon both. Other are USA, ये भी हमें Russia, पता. and China. Space technology, military technology, pharmacy research, healthcare technology, and innovations. India has made great progress in the field of science and technology and is performing excellently. लोकेशन. India lies in the South Asia portion of the Indian Ocean, a zone with unpredicted potential. American, African, European, and Asian sea trade route passing through or close to Indian territorial waters. The central location of India is considered of great value as it helps India to keep a close contact for business purpose with America, Africa, Europe, and Asia. कल्चर एंड टूरिज्म.
टूरिज्म भी India बहुत with its है। diverse and charming culture, art, music, history, spiritual and social model, witnessing the growth of booming tourism कैलाश industry. टेम्पल हमने देखा था। India is home to the rich culture and spirituality. No country in the world as diverse as India. The country has total 28 states and 8 union territories, and they all have their own culture, tradition, art, music, languages, costume, and food. And no country in the world is more colorful than India. Even India has entire colorful cities like Jaipur, the city of हमने pink, देखा था। Udaipur, the city of white, Jodhpur, the city of blue, Jaisalmer, the city of gold, and Kanyakumari, the city of seven colors. India is a कन्याकुमारी whole world बहुत- itself. India has snow like Greenland, beauty like Switzerland, desert like Arab, wildlife like Africa, beautiful cities like Europe, forest like Brazil, beaches like America, and mountains like Japan. Even India has white desert also. Hundreds, thousands of beautiful temples, तकरीबन सारे historical temples बनने monuments, के हैं। incredible architectural sites, and extreme beautiful hill stations like Manali, Nainital, Simla, and Spiti Valley. India is just incredible. The fastest growing major economy, the fastest growing major stock market, the fastest growing startup ecosystem, the fastest growing major industrial country, and home to the highest number of under construction mega projects in the world. There is no doubt that India is getting ready to become a global superpower. ओके यार, अच्छा इसमें इतनी सारी चीज़ें थी और उन्होंने ना हर सेक्टर को कवर किया, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ये साइंस, उसके अलावा इसरो, मिलिट्री, स्मार्ट फिर सिटीज जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं सभी को कवर कर और लिया। 100 स्मार्ट सिटीज बनने का है। हाँ, और हमें काफ़ी सारी इसलिए सिमिलर लगी है वीडियो क्योंकि हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स देख रखे हैं, हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है। हाँ, हमें ये जितना स्पीति वैली हो गई, मनाली, सब का हमें पता है, वाइट डेजर्ट का हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देख रखा है। तो हम यही सोच रहे थे कि यार ये हाँ सब चीजें तो हमको काफी सारी पता है कि इंडिया जैसी कलरफुल कंट्री और कोई भी नहीं है। जिसमें वो एक जगह दिखाई थी कलरफुल सी, कन्याकुमारी थी, कन्याकुमारी वो इतनी कलरफुल सी है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इकोनॉमी वाइज तो बता ही रहे हैं कि 3rd पे पहुंचने वाली है, लेकिन सुपर पावर कह रहे हैं। IMF ने भी बोल दिया कि इंडिया जो है ना चाइना और अमेरिका के पीछे पीछे आ रही है। US आई थिंक जर्मनी को और जापान को क्रॉस करने वाला है, ये कर चुका है। हाँ, काफियों को क्रॉस करके नंबर 5 पे उन्होंने बताया था। और अब ये अगर सुपर पावर की बात करें तो वो कह रहे हैं अमेरिका और चाइना के बिल्कुल बाद इंडिया खड़ा होने वाला है। और इतने अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स हैं और किसी भी सेक्टर में इंडिया पीछे नहीं है। मतलब है कि ऐसा नहीं कि साइंस में अगर वो आगे जा रहा है तो उसने अपने आप को दूसरे किसी सेक्टर में, मिलिट्री में पीछे कर लिया, नहीं, सब जगह पे टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं। मिलिट्री पर्सनल्स 5 पॉइंट कितने मिलियन थे और उनका बजट 70। जिस तरह स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स तो वहां पे चलती ही चलती हैं। और जिस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताया कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के बन रहे हैं, डिफरेंट चीजों में आ गया। तो मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको पहले से पता थी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें पता चली हैं। एंड इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात कि जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज वो इंडिया में आ रही हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज भी थी। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इसको भी बताया, आप लोगों के साथ भी शेयर हुआ कि एप्पल ने अपनी फ़ोन्स को अब इंडिया में जो है बनाने का फैसला किया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि आपकी अपनी ही कंट्री में टाटा जैसी गाड़ियाँ बनती हैं, टाटा, महिंद्रा, मतलब इतने बड़े बड़े। और वो जैसे कि हम पहले भी कह चुके हुए हैं कि बड़े बड़े, खैर वो तो CEOs जो हैं बड़ी बड़ी टेक जायंट्स के, वो भी इंडियंस ही हैं। तो इंडिया काफ़ी प्राउड, मुल्क भी प्राउड कर रहा है अपने लोगों को, और इंडियंस भी प्राउड कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी जा रहे हैं ना अपने मुल्क इंडिया के लिए फ़ख्र का बाइस बन रहे हैं, फ़ख्र का रीज़न बन रहे हैं। तो दैट्स इट। आप बताएं आपको कितना प्राउड फील होता है ऐसी वीडियोस जब हम देखते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है। तो आप जो इंडियंस हैं उनको तो वाकई बहुत अच्छा लगता होगा। तो हमें जरूर बताइएगा एंड रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। So what to do, like, share, subscribe for my vlogs and जाके like, share, subscribe कर ले। Instagram पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो शोज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।